Okay, so we had covered or we were discussing about the expenditure method of accounting of final, not final, sorry, of the national income. So let's see what we have covered in the expenditure method. Expenditure method means final expenditure on gross domestic product at market price. Its other names are income disposal method and consumption and investment method. The expenditure are basically divided into two parts, that is consuming and investing. तो कंजम्पशन भी एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेंडिचर है as far as national income is concerned. Expenditure can be divided into two different types. The first one is final expenditure and the second one is intermediate expenditure. When goods are bought for final consumption, it is known as final expenditure. On the other hand, when goods are bought consumption in the intermediate terms, that is, they are going to use these goods in order to produce something else, then it would be considered as a intermediate good. Intermediate good और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या फिर इंटरमीडिएट गुड कहा जाता है. तो इंटरमीडिएट गुड के ऊपर जो खर्चा किया गया उसे हम लोग इंटरमीडिएट एक्सपेंस कहेंगे. So the difference between final good and intermediate good is that final goods are outside the boundary line of production. That is वो फिर से प्रोडक्शन में एंट्री नहीं करते हैं. ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड जो है वो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है. दे आर स्टिल इन प्रोडक्शन. एज अ रिजल्ट whatever you are doing in related to the intermediate good, you would be not consuming it and in the form that it is. Okay, उसे आप जैसा है वैसे कंज्यूम नहीं कर लोगे, उसको यूज करके कुछ और बनाया जाता है उसमें. वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज नॉट एडेड अगेन. फाइनल गुड्स की वैल्यू फिर से ऐड नहीं की जाती है क्योंकि एक बार ही अकाउंटिंग उसकी की जाती है. ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड्स की अभी तक हमने उस वैल्यू को ऐड नहीं किया. वी हैव नॉट येट एडेड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स. सो ट्वाइस कैलकुलेशन फाइनल गुड्स का नहीं होगा. इंटरमीडिएट गुड्स का अभी तक कैलकुलेशन किया ही नहीं गया है, अभी तक उसका अकाउंट किया ही नहीं गया है. That is the major differences between these two things. Final goods are ready to consume, whereas intermediate goods are to be used in order to undertake production in the factories again. And फाइनल गुड्स जो है वो कंजम्पशन के लिए आप डायरेक्टली यूज करोगे. ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड्स को आप कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करोगे. You can't use them in consumption or by it can be used as for consumption by the producers. So final expenditure को हम लोग अगर डिवाइड करें, if we are talking about the final expenditure is basically expenditure on final goods and services in an accounting year. Final expenditure can also be known as gross domestic product at market price. मार्केट प्राइस पे जो प्राइस चल रही होगी उसे हम लोग फाइनल गुड्स की तरह कंसीडर करेंगे या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर की तरह कंसीडर करेंगे. द गुड्स आर परचेज फॉर फाइनल कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट या फिर से कुछ कंजम्पशन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ना कि कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए फाइनल एक्सपेंडिचर के गुड्स को हम लोग यूज करते हैं. Final expenditure is basically can be divided into four different types. The first one is known as private final consumption expenditure, जिसे हम लोग C से denote करते हैं. C का मतलब ये है कि these have been consumed by the people for these have been consumed by individuals, a household or a NGO in order to provide services. इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए उन्हें यूज करते हैं. हाउस होल्ड जो है वो भी अपने वांट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं. एनजीओ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए या फिर सोशल सर्विसेज करने के लिए उन गुड्स को फाइनली यूज कर लेते हैं. Then there is government final consumption expenditure. Government final consumption expenditure is basically that type of consumption which is undertaken by the government, but यहाँ पे government उन्हें उन goods को use करके कुछ और produce नहीं करने वाली. Again, the government is also consuming them for the government is also consuming them for the last time, and here the consumption would be undertaken by the defense personnel, for example. So defense personnel के जितने भी खर्चे होते हैं उसे हम लोग फाइनल कंजम्पशन में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर देते हैं. Then there is investment expenditure. Investment expenditure जो है वो purchase of final goods and service final goods by the producer के लिए किया जाता है. यहाँ पे उन goods को इसलिए खरीदा गया है क्योंकि producer जो है उन्हें finally consume करना है. He is not going to use those goods in order to undertake any other type of production. Now,
And the last one is imports, that is net exports या फिर जिसे हम लोग net imports minus exports कहते हैं. Imports minus exports में हम लोग क्या करते हैं is that we try to determine, give me 1 minute. या इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है वो हम लोग नेट निकालते हैं, दैट इज टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स हम लोग निकालते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी अराइव एट द नेट एक्सपोर्ट्स. और नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. when net exports are positive it means that we have exported more than we have imported. On the other hand when net exports are negative it would indicate that हमने export कम किया है और import ज्यादा किया है. So when we add all of these things, that is c plus d plus I plus x minus m हम लोग करते हैं तब हमारे पास हमारा GDP at market price निकल के आता है. Okay, GDP at market price is calculated as c plus d plus I plus x minus m. Okay, so let's see as to how the chronology functions in the case of GDP at market price. So GDP at market price निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे we calculate it as under, first and foremost we have the GDP at market price minus, if we depreciation हम लोग निकाल देते हैं तो we get NDP at market price. If we remove the net indirect taxes then we get NDP at factor cost. If we add factor income from abroad, we get NNP at factor cost. ऐसे हमारा कैलकुलेशन चलता है जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं. When we use the expenditure method in this manner, we are able to calculate or we are able to arrive at NNP at factor cost from GDP at market price. GDP at market price से NNP at factor cost तक जाने का रास्ता ये. Now there are certain precautions that have to be taken into account while you are using the expenditure method for undertaking calculation of national income accounting. So let's see those precautions. Precautions to be taken while expenditure method is used. So the first precaution that has to be taken into account when expenditure method is used is that final expenditure is to be taken into account only. Final expenditure only has to be taken into account. Now this is done to avoid
डबल काउंटिंग, क्योंकि अगर हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को अगर हमने कंसिडर कर लिया बीच में, then we will be counting the expenditure twice. We would be including it twice into the calculation of national income accounting. So इसीलिए एक ही बार हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करना है. For the final expenditure is only to be taken as the national income into the national income accounting. That is final income, final expenditure का मतलब है फाइनल कंजम्पशन के लिए जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जाते तभी उनकी अकाउंटिंग नेशनल इनकम में करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए. देन द सेकेंड प्रिकॉशन इज वैल्यू ऑफ intermediate goods not to be included as the value of it is already included in the value of final goods. फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इस गुड की वैल्यू को हमने इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग फिर से अकाउंटिंग नहीं करेंगे. वी विल नॉट बी इंक्लूडिंग इट इनटू द अकाउंटिंग ऑफ द नेशनल इनकम बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल की वैल्यू को हम लोग अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शायद से उस टाइम पे हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का टाइम अगर आ गया है. Okay, say for example every year national income accounting is done at say 31st March. Okay, anyways, happy new financial year. We have entered into a new financial year, that is 2022-2023. Okay, a big day for us the commerce students because we have entered into a हमारे लिए financial, हमारे लिए ये new year. So anyways, if for example if people are undertaking national income accounting every year on the 31st of March. 31st of March में अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदा भी है और रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा भी हुआ है तब भी उसकी वैल्यू को नहीं इंक्लूड करना है. व्हाई? बिकॉज जनरली अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, व्हाटएवर इज देयर in that particular accounting period with us, we have to account for it, we have to take it into consideration. हमें उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर देना. पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये कहता है कि उससे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करना चाहिए क्योंकि वो फाइनल गुड नहीं है. उसकी वैल्यू अगर अभी हम लोग डाल देंगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में तो कहीं ना कहीं पे आगे जाके अगले साल जब हम लोग इनकम एस्टिमेट करते हैं तब प्रॉब्लम्स अराइज होंगे बिकॉज हमने इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड कर ली. तो ये इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को नहीं इंक्लूड करना है. दैट्स व्हाट नेशनल इनकम अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड सेज. Then the third precaution that has to be taken into account is expenditure on second-hand goods should not be included as जिस साल में हमने उसे खरीदा था. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिस साल में वो बनाया गया था वो गुड, उस साल में उसकी पूरी की पूरी वैल्यू को अकाउंट किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, if I am buying a second hand, let's say, cycle in 2022 and the cycle was first initially purchased in 2019, तो 2019 में पूरी की पूरी साइकिल की वैल्यू इंक्लूड कर दी गई थी. तो 2022 में जाके अगर मैं वो साइकिल खरीदती हूँ किसी और के पास से
तो उसकी वैल्यू आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अलग से नहीं दिखाओगे, क्योंकि 2019 में साइकिल की पूरी वैल्यू डाली गई थी, तो अभी उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। हम सेकेंड हैंड में गुड्स खरीदते हैं तो उसकी अकाउंटिंग नेशनल इनकम में नहीं की जाती। So that has to be kept in mind. Further, the next aspect is whenever we buy and sell shares or debentures or bonds or any type of e-securities, okay, कोई भी टाइप का सिक्योरिटी हम लोग ई फॉर्मेट में या फिर पेपर फॉर्मेट में भी खरीदते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग नेशनल इनकम में नहीं की जाती। एक्सपेंडिचर on shares and bonds is not included in the total expenditure method, as they are just paper claims. ओके, पेपर क्लेम से यहाँ पे कोई गुड नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई सर्विस नहीं क्रिएट हो रही है, इसीलिए वो पेपर क्लेम से, इसलिए कहीं ना कहीं पे उनकी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नहीं इंक्लूड करते। सो पेपर क्लेम्स की वैल्यू को नहीं इंक्लूड किया जाता, बीट बॉन्ड्स, बीट डिवेंचर्स, बीट शेयर्स, बीट सिक्योरिटीज, बीट म्यूचुअल फंड्स और एनीथिंग। ओके, क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, बिकॉज नथिंग इज बीइंग प्रोडक्शन is added into the flow of final goods, because nothing is being added in the flow of final goods because of them they are not included in the national income अकाउंटिंग, इसीलिए उन्हें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। वैल्यू एडिशन का मतलब उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस करके कुछ ना कुछ आप ऐड कर पा, इंटरेस्ट जरूर से मिल रहा है पर वो वैल्यू एडिशन नहीं है, क्योंकि एंड रिजल्ट यहाँ पे कोई सर्विस नहीं बाहर निकल के आ रही है, ना ही कोई वहां से कोई प्रोडक्ट बाहर निकल के आ रहा है। देन the next precaution that has to be taken into account is expenditure on transfer payment. Expenditure on transfer payment by the government is not included as no value addition is being undertaken due to such payments. For example,
social security, and scholarship. सोशल सिक्योरिटी और स्कॉलरशिप की वैल्यू को नहीं इंक्लूड की जाती है इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बिकॉज सोशल सिक्योरिटी या फिर पेंशन देने की वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. इन द सेम मैनर स्कॉलरशिप देने की वजह से भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. दैट इज these people are not going to go into production activities and they would be starting producing if they get the scholarship or old age pension. तो ये स्कॉलरशिप इसीलिए दी जा रही है क्योंकि बच्चा पढ़ लिख जाए. पेंशन इसीलिए दी जा रही है सो दैट द ओल्डर पीपल आर एबल टू लिव इन अ वेरी पीसफुल एंड सेफ मैनर. सो पेंशन और स्कॉलरशिप के जितने भी ट्रांसफर किए जाते हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द income into the national income calculation of a particular country. So these are the precautions that have to be kept in mind while you are using the expenditure method of national income accounting. Uh, Now we would be talking about nominal national income or national income at current prices and real national income, that is national income at constant prices. तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने देखने हैं एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम and national and real national income. Okay, नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है, रियल नेशनल इनकम क्या है, वो हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी करने वाले हैं. तो लेट्स पुट अ हेडिंग. नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम. Nominal national income, by the name itself is suggesting that while estimating the so nominal national income basically means the estimation of national product, goods, and services by multiplying them with their prices. Okay, value of goods and services are multiplied by their prices. ओके, प्राइजेस के साथ में जब हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट द नॉमिनल देन वी गेट द नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और नॉमिनल इनकम. नॉमिनल इनकम का मतलब है कि करंट प्राइसेस एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर हम लोग ये वाला कैलकुलेशन करते हैं. Now, when we are talking about the nominal income at that time, it is also referred to by, it can also be known as national income at current prices. नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस का मतलब है करंट लेवल पे जो प्राइसेस चल रहे हैं उसी के ऊपर हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर देते हैं. So as the prices, current prices increase, the national income also increases. As the current prices fall, the national income also falls. So it is basically
प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज नहीं होता है, प्रोडक्शन में कोई डिक्रीज नहीं होता है, येट देयर इज अ चेंज इन द नेशनल इनकम, दैट इज नोन एज national income or nominal income at current prices. But prices don't remain constant. It is one of the things that has to be taken into account कि जब भी हम लोग प्राइजेस की बात करते हैं तो प्राइजेस कभी कांस्टेंट नहीं होते, because prices are not constant in nature. So the prices are not current prices don't remain constant. For facilitating the calculation, we use the real income or national income at current constant prices. तो ये नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट प्राइसेस जो है वो आपको एक्यूरेटली आपका नेशनल इनकम एस्टिमेट करके देता है, एज द बेसलाइन डज नॉट चेंज। ओके, बेसलाइन का कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होता है। Monetary income, this is also known as monetary income. Nominal income, nominal national income, it can also be known as the other name of it is monetary income. मॉनेटरी इनकम का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं पे यू आर सेइंग दैट ओके दिस इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स को आप डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए उसे हम लोग मॉनेटरी वैल्यू देख रहे हैं, या फिर मॉनेटरी वैल्यू हम लोग उसे कहते हैं। Monetary income or national income at current prices is money value of all final goods and services measured at current prices. So it can be defined as national income at current prices is the income at current prices okay, it is income at current prices. What is this income? This income is earned by every resident, every normal resident of a country during 1 year. It is not possible to know the real changes in growth rate of income economy when you are seeing it in a very light वेरी लेस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, हम लोग शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम जहाँ से एक स्टैंड पॉइंट लेके खड़े होके सारे इनकम्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग शॉर्ट टर्म व्यू अडॉप्ट करते हैं जब भी हम लोग एग्रीगेटली एग्रेसिवली ट्रेड करने जाते हैं। तो उस टाइम पे मॉनेटरी इनकम को अगर आप मेजर कर रहे हो करंट प्राइसेस पे, तो अब वो आपको थोड़ा सा मेलो करता है या फिर ब्रिंग डाउन करता है, rather than becoming very forceful in making your investments. You come to realize that okay, national income ये है, national income at GDP is something else. So कौन सा accurate measure है in order to undertake the different activities that you have to determine, and you would be able to undertake the activities in a seamless manner when you are able to determine it in a very easy manner. Monetary income or money income at current prices is not an appropriate index for growth because जब भी हम लोग कांस्टेंट करंट प्राइसेस की बात करते हैं तो प्राइसेस हमेशा ऑल्टर होते रहते हैं। प्राइसेस ऑलवेज वेरी व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट मार्केट। सो करंट मार्केट में अगर आप प्राइसेस वेरी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी नेशनल इनकम भी ऊपर नीचे होती रहेगी। फॉर एग्जांपल आई विल टेक इनटू अकाउंट एन एग्जांपल फॉर द सेम। 2 साल हमने लेने हैं, ईयर्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे कमोडिटी लिखेंगे and we would be writing the quantity, we would be writing the price and the total value. So in 1990, 1991,
if the value of a XYZ currency was, let's say, value of that particular commodity, हमने 3 commodities consider करने हैं, wheat क्योंकि staple diet है, cloth क्योंकि पहनना है cloth हमने, और sugar क्योंकि हमें चीनी की जरूरत पड़ती है. Okay, in a particular year, if the country has produced 20 tons of 20 tons of wheat and it is being sold at 100 rupees, then the value of this particular good or this particular commodity would be how much? Total value कैसे निकालोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी. तो यहाँ पे 100 into 20 is equal to 2000 रुपीज. ओके, 2000 रुपीज की हमारी नेशनल इनकम क्रिएट हो रही है वीट में से. देन वी हैव 100 meters of cloth and 5 tons of sugar. ओके, सो अगर इन दोनों की वैल्यू भी ऐड की जाए तो क्लॉथ जो है 5 रुपीज पर मीटर है और शुगर जो है वो 5 रुपीज पर टन है. ओके, तो आपने उसे यू हैव टू कन्वर्ट दिस टन्स into not tons into this amount of whatever is being earning by the person into the value format. तो value format में कैसे निकल के आता है? 100 into 5 is equal to 500 and 5 into 5 is equal to 2500. So the value that we get here is total market value is 5000 rupees. On the other hand, okay, अगर हमने अगर नेशनल इनकम अकाउंटिंग करना है और हम लोग ग्रोथ मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्रोथ हमेशा ईयर ऑन ईयर मेजर किया जाता है. अब ईयर ऑन ईयर का अगर बेस लाइन बदल रहा होता है या बेस ईयर बदल जाता है तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत होती है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर वी हैव ग्रोन और वी हैव नॉट ग्रोन. So if we have grown, then the calculation that would be undertaken is कि इस साल हमारा 5000 आया नेशनल इनकम, अगले साल हमारा यही नेशनल इनकम 10,000 हो जाएगा. ओके, यही नेशनल इनकम 10,000 हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी वुड बी अज्यूमिंग इन केस ऑफ करंट प्राइसेस. करंट प्राइसेस जैसे मार्केट सिनेरियो होता है वैसे ही ये प्राइसेस ऑल्टर होते रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ करंट सिनेरियो. करंट सिनेरियो में prices of a particular commodity increase, the production processes also start to pick up. On the other hand, अगर प्रोडक्शन प्रोसेसेस हमने कांस्टेंट रेट पे एसेस किए तो कहीं ना कहीं पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई. इज इट क्लियर? तो ये ऑल्टरेशंस हो रहे हैं. दैट्स व्हाट वी वुड बी नाउ ट्राइंग टू प्रूव. ओके, 1990 में ये सिचुएशन था कि भाई ये 5000 रुपए में हमारा नेशनल इनकम था. अब हम लोग लेट्स अज्यूम कि 2019-20 की बात कर रहे हैं and the commodities remain same, but here the price per unit has increased. Okay, for example wheat हमने अभी भी 20 टन ही खरीदा है, क्लॉथ हमने अभी तक 180 मीटर ही खरीदा है और शुगर जो है वो 5 टन का प्रोडक्शन ही किया गया है. अब अगर हम लोग उसकी प्राइस डिटरमाइन करने जाए तो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल wheat is 1000 rupees per ton. ओके, 1000 rupees per ton का wheat हमने खरीदा है. इन द सेम मैनर क्लॉथ 20 रुपए हो गया है, 20 रुपए पर मीटर हो गया है and sugar has become or increased value to 1600 rupees per ton. Now in this case what has happened is, see, the production remains the same, 2185,
Yet there is a change in the national income accounting because यहाँ पे अगर हम लोग 20 इंटू 1000 करें तो 20,000 हुआ, फिर 120 इंटू सॉरी 100 इंटू 20 करें तो 2000 होगा, और 160 इंटू 1600 इंटू 5 अगर हम लोग करें पर टर्न टोटल ओवरऑल अगर हम लोग निकालते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 30,000। 30,000 जितनी वैल्यू हमारी नेशनल इनकम की हमने बढ़ा दी है। या अभी ये कैसे बढ़ी है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस तो कांस्टेंट थे, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। द प्राइसेस हैव चेंज्ड एंड ड्यू टू दिस व्हाट दीज एस्पेक्ट्स हैव हैपेंड इज, ये प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सारी की सारी चीजें ऊपर पुल्ड अप हो गई। ओके, इट हैज पुल्ड अप the entire pricing that is being levied on it. This is so because pulling up of the resources might help the organization in order to eliminate the competition. For example, प्राइजेस अगर बढ़ रहे हैं, ओके, प्राइजेस हमने बढ़ा दिए, सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग प्राइजेस बढ़ा देते हैं, तो कंज्यूमर के लिए कॉस्टली हो जाएगा, कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करेगा तो दो बाकी जगहों पे वो कम स्पेंड करेगा, बाकी जगहों पे वो कम स्पेंड करेगा, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कोई बॉन्ड उसकी अनसेटिस्फाइड रह गई। So, in the same manner, what happens in case of national income accounting at current prices is that merely a change in price, a mere change in price would be changing the equation in such a drastic manner कि आपका inflated बहुत ही ज़्यादा आपका national income दिखने लग जाता है। So, instead of using current rate in order to measure the national income, experts suggest that we should be using GDP at constant prices. Now, what does GDP at constant price means? कि हम लोग कोई एक बेस ईयर डिसाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1990 1991 बिकॉज उसी साल में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, तो 1990 1991 को हमने बेसलाइन बना दी, उसके ऊपर हम we are calculating the national income on over and above this particular thing. So हम लोग national income की calculation current rate में कैसे करेंगे? Say for example the thing is same, okay, the entire setup is the same thing, just the difference comes when we are using this one. Okay, I'll be using another color in order to write the next one. So 20 100 और 5 टन ऐसे ही रहेंगे। आपका यहाँ पे प्राइसेस बदल रहे हैं, प्राइसेस कैसे बदल रहे हैं, यहाँ पे योर प्राइसेस रिमेन्स 100 5 एंड 5। ओके, सो यहाँ पे सीधे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया है, rather than producing 50 tons, because हमारा over a period of time हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी होगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 20 की जगह पे 30 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी रिसेंटली। देन 100 मीटर कपड़े की जगह पे 200 मीटर कपड़ा चाहिए, और यहाँ पे 5 टन शुगर बेचने की जगह पे वी आर सेलिंग हाउ मेनी टन्स, 10 टन्स। Okay, so what has happened is हमारा जो प्राइजेस है वो तो कांस्टेंट रहे 105 एंड 5, बट यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ गई, देयर इज एन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ पे हमारा जब कैलकुलेशन निकल के आता है फर्स्ट स्टेज दैट इज वीट के लिए आपने आइडियली कितना स्पेंड करना चाहिए था, 3000 रुपीज, या ओवरऑल वीट हमने अगर बेच दिया है तो मार्केट में जितना भी वीट है अगर वो बेच दिया गया है, सो देन 3000 रुपीज कैन बी अर्न्ड आउट ऑफ इट। देन क्लॉथ हमारा, पहले हमने 100 मीटर कपड़ा बोला था, 200 मीटर्स हमारा अभी का रेट है,
या फिर अभी का प्रोडक्शन है. वी हैव इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ दिस मच दीज मेनी इयर्स एंड स्टैंडिंग एट दिस स्टेज वेयरइन हम लोग 100 यूनिट 25 पैसे पे वी आर सर नॉट 25 पैसे, पहले हम लोग 20 रुपए पे बेच रहे थे, अभी हम लोग 5 रुपए पे बेचेंगे उसे. सो अगर हमने 5 रुपए पे बेचा है देन द वैल्यू कम्स डाउन टू 1000 रुपीज. वाई 1000 रुपीज? क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी है. इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 meters we are producing now 200 meters. So 200 into 5 is equal to 1000. Okay, and lastly the sugar which is there, हमने 10 किलो शुगर का प्रोडक्शन किया. पहले 5 था, अब 10 हो गया, पर प्राइस 5 के 5 रहा. दैट इज 5 क्विंटल ही 5 रुपए पर टन ही मिल रहा है. देन व्हाट वुड बी द वैल्यू? दैट इज 10 into 5 is equal to 10 into 500. 10 into 500 is equal to 5000 रुपीज का हमारा इनकम हो जाता है यहाँ पे, नेशनल इनकम. सो आर नेशनल इनकम कम्स अप टू और कम्स डाउन टू 5000 रुपीज. सो अगर 5000 रुपीज को अगर हम लोग ये तीनों को ऐड करके देखें, देन व्हाट वी फाइंड इज the national income accounted for or the total market value in case of the real income distribution is 9,000 rupees rather than 30,000 rupees. 9,000 rupees की जगह पे हमारा national income actually 30 sorry not 30 our actual income instead of being 30,000 it is actually 9,000 rupees. So above the this calculation part was covered because it would help you to understand as to कि क्यों कहाँ पे आपने कौन से प्राइस को अडॉप्ट करना है. Why? Because आपको खुद बैठ के गिनने की जरूरत नहीं. The government has already issued and published these data. तो ये जो डेटा पब्लिश किया गया है उसमें आपने कब कौन सा डेटा यूज करना है, दैट इज टू बी वेरी क्रूशियली एग्जामिन्ड बाय यू बिफोर यू स्टार्ट द any particular activity which is related to national income accounting. नेशनल इनकम अकाउंटिंग के रिलेटेड में कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले आपने ये देखना है कि आप कौन सा बेसलाइन यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं. तो बेस ईयर जनरली हमारे लिए 1990 1991 को लिया जाता है in order to understand as to from the introduction of reforms how did India develop, how much did India develop. Okay, so इसीलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग ऐसे लिया जाता है. तो constant prices if we are trying to see as to whether the country has developed or not, then we would be adopting constant prices. On the other hand, if we are trying to see whether our economy is growing or not, okay, कि ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, उस टाइम पे हम लोग करंट प्राइसेस को देखते हैं. So in that manner both the conditions or both the calculations have to be taken into account by the researcher in order to undertake their own appropriate calculations of the national income accounting. So we will be stopping here today. Tomorrow we might have a lecture or we might not have a lecture tomorrow. So tomorrow or whenever we would be having a lecture again, we will be starting with expenditure calculation. Okay, expenditure क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे स्पेंड करती है, उन सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Just give me 2 minutes.